So, good morning, everyone. This is the part 9 and the final part of this chapter, chapter 2, Cell the Building Block of Life. एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोस्टली जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उसको पढ़ेंगे सो दैट यू कैन हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चैप्टर. सो अभी उन्होंने नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज किया है. एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज के बजाय दे यूज द वर्ड रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन. रिवाइज होती है किसी चीज को दोहराना, रिफ्लेक्ट होती है उसका रिफ्लेक्शन करना, मीन्स उसको प्रतिबिंब के बारे में सोचना कि हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कितना सीख सकते थे, किस एक्सटेंट तक चीजें हमने सीखी हैं. रिफाइन होता है धीरे धीरे जो चीजें हमारी जो कमियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं, उनको हम धीरे धीरे थोड़ी कम करते जाएं और जो कंटेंट है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको थोड़ा बढ़ाते जाएं. सो this is the PDF which of the answers that I have compiled, and I will provide you this same. And yeah, we'll try to answer the questions now. I'll try to keep the things very simple and basics. Okay. So differentiate between the following pairs of terms based on the clues given in the parenthesis. कि हमें जो दो टर्म्स दी हैं उनमें डिफरेंसेस को बताना है ना, किस आधार पे, जो पैरेंथेसिस में कोमा के अंदर जो चीजें दी गई हैं उनके आधार पे. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. इसके आधार पे बताना है परमिएबिलिटी. अच्छा, हमें पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, whereas our cell wall is permeable. Cell membrane is selectively permeable. It acts like a strict gatekeeper, allowing only the useful things जो selected जो आने देती है, जैसे पानी हो गया, some nutrients हो गया, oxygen हो गया, to enter only while stopping the unwanted materials. Whereas cell wall is fully permeable. It is an outer covering that allows any liquid or substance to pass through it without blocking anything. So थोड़ा ये like this is the written answer that you can write about. Now, second is like rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum based on the structure and how it looks. Rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to them, that's why they look rough. And smooth endoplasmic reticulum doesn't have any ribosomes attached to them, that's why they look smooth. So let's study it. Rough endoplasmic reticulum, its surface looks rough and bumpy because it has small granules called ribosomes stuck to it. Granules होते हैं बेटा, कण, दाने, बीज जैसे structures. Okay? These ribosomes have some building proteins, whereas smooth endoplasmic reticulums, its surface looks completely smooth because it does not have any ribosomes on it, and its function is to make fats. Yeah. Third is chloroplast and chromoplast, based on the pigmentation and pigments. Chloroplast, they have chlorophyll. Chromoplast, they don't have chlorophyll. They could have any other color-giving pigment, just say xanthophylls, carotenoids. So chloroplasts contain green-colored pigment called chlorophyll. It helps plant leaves absorb sunlight to cook the food, photosynthesis में. Whereas the chromoplast, chromo means होता है color, chromo means color, and chloro यहाँ से है chlorophyll से. Okay, this word is from chlorophyll, and this means color. Now these contains colored pigment like yellow, orange, red, जो carotenoids and xanthophylls होते हैं, and they give beautiful colors to the flowers and fruits that attracts birds and insects that helps in the pollination and seed dispersal. उसका काम क्या होता है, अगर प्लांट्स जो फ्रूट्स हैं जो कलर्ड है, फ्लावर्स जो कलर्ड है, उनको देख के अगर पक्षी आ रहे हैं, ठीक है, कीट आ रहे हैं, कीट पतंगे आ रहे हैं, तो उनका रोल किसमें होगा, पोलिनेशन. पोलिनेशन मतलब सीड डिस्पर्जल होता है बीज का फैलाव, बीज को बिखेर देना, ठीक है. जैसे किसी पक्षी ने कोई फ्रूट खाया, बेर खाया जो लाल रंग का होता है, उसकी गुठली होती है, उसे पेट में जाएगी एंड थ्रू इट्स एक्सक्रीटेड डाइजेस्टिव सिस्टम से वो कहीं दूर उड़ के जाएगा, वहां गिर जाएगी, तो पेड़ वहां उगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्जन. Now, let's move on to the second question. Two similar animal cells are placed in two different solutions. Okay, हमने दो animal cells ली, हमने उसको different solution में place कर दिया. Okay? Cell X is placed in pure water. Okay, cell Y is placed in concentrated salt solution. This is hypotonic solution. This is
hypertonic solution. Okay, cells are observed after some time, and cells that are X, this swells and cell Y shrinks. Which statements provide the correct explanation for the above observation? देखो, hypotonic solution में चीजें swell होती हैं हमेशा. We remember this. Hypertonic में they shrink या plasmolize. Okay, तो देखते हैं. Salt molecules and always remember ये सब क्यों होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन एंड आउट क्या मूव करता है? पानी. पानी. ओके. हाँ. Salt molecules moved into cell Y causing it to shrink. नहीं. Water moved into cell X. More water moved out of cell Y than the salt solution entered. Salt solution enter नहीं करता है. This is also wrong. Sorry. Water moved into cell X, yes, and moved out of cell Y through the cell membrane. This is the right answer. Solute movement cause osmosis in both cells. नहीं, solvent move करता है, never solute. So the correct answer is the third answer because cell membrane के through केवल पानी move करता है. And here the simple explanation as well. We can go through it. Osmosis is simply the movement of water from the side with lots of water to the side with less water. Yes. Direct solution towards the concentrated solution. Cell X cells, pure water has higher water level than out inside the cell. So water moves inside the cell X, making it to swell. As you can see, पानी अंदर की साइड मूव कर रहा है. पानी is moving inside. इसमें पानी बाहर की साइड मूव कर रहा है तो shrink होता है. Now, cell-wide shrinks, the concentrated salt water has a very little water compared to what's inside of the cell. So the water moves out of the cell wine into the beaker and causing cells to dry up and shrink. तभी हमारी सेल shrink हो जाती है क्योंकि पानी जो अंदर था वो बाहर मूव कर दे रहा है. Now, let's look on to this question. Okay, look at the diagram of a cell that is given in the figure 2.20. Now, identify the parts labeled from A to Z and correctly match them with their functions given in the. तो पहले एक बार पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद ए. दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज आवर न्यूक्लियस. ओके, यू शुड राइट डाउन ऑल द पार्ट्स डाउन बिलो. टेक योर कॉपीज आउट एंड राइट. कॉपी निकालो, पता करो कि कौन सी चीज क्या हो सकती है. ओके, एंड दिस इज गोल्जी बॉडीज. ठीक है, थोड़ा दूर है देखो न्यूक्लियस से. अगर ये होता ना, दिस हैज बीन अवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, दिस इज क्लोरोप्लास्ट. प्लास्टिड सिंपली यू कैन यूज. दिस इज दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. प्लांट सेल है, राइट. बड़ा सा वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल है. प्लांट सेल है सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर क्या होती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड देन देयर इज वैक्यूल, वेरी लार्ज वैक्यूल. तो हमने ये चीजें कर दी हैं. ठीक है. नाउ कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, कौन कंट्रोल करता है? ऑफ कोर्स न्यूक्लियस. साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. एनर्जी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. Storage organelle that also provides rigidity. That is our vacuole only. Separate the cell content from the surrounding. Excuse me. So, there are two questions here. Okay, we'll come to them a bit later. Now, pack and stores the material received from endoplasmic reticulum. Golgi bodies do this function. Helps in manufacturing the food, that is our chloroplast. Now, provides structural rigidity to the cell. वो हमारी cell wall करती है. Separates the cell content from the surrounding. वो हमारी plasma membrane करती है. I hope आपको समझ आई हो ये चीजें. This is the image that's given. See, mitochondria is the site of cellular respiration. Nucleus controls the activities of the cell. Golgi body packs and store. Chloroplast helps in manufacturing the food. Cell wall provides structural rigidity. Cell membrane separates the cell content from surrounding. Vacuole is the storage organelle. Excuse me. So these are the correct matches which we have done as well. Let's move on to the next question. Yeah. Which of the following options of the pairs of the cell organelles are correctly placed under the given category? पहला है, एक साइड दे रखा है options, एक साइड है present in the plant cells, absent in animal cells. Now, leucoplast is present in the cell wall. Leucoplast is a kind of plastid, and cell wall is absent in the animal cells. True. This is true actually. This is actually very correct. Now,
Mitochondria is present in cell wall. Ribosomes are present in both. So this is wrong. Cell wall is present. Golgi apparatus is essential organelles दोनों में present होता है. Lysosome is present in cell. Endoplasmic reticulum सब दोनों में present होता है. So the correct option is E. The first answer. Let's match our answer. Yeah, it's true. Leucoplasts हमारे क्या होता है? They are the colorless plastids found inside the plant cell, like potatoes that stores the food. Animal cells never have plastids. Okay. Now cell walls are only present in plant cells for safety. Yeah. Animal cells do not have cell wall, so other options are like incorrect. Now there are two students. The next question is question number 5. There are two students, Renu and Rohit. They were having a discussion on the plastids. Renu emphasized that all parts of plant, even root, contains plastid, whereas Rohit did not agree. Told her that plastids are absent in plant roots since roots are underground and do not need to perform photosynthesis. Who is correct? Justify your answer. देखो जो रेन्यू है वो कह रही है कि प्लास्टिड प्लांट के हर पार्ट में होता है इवन इन द रूट्स. रोहित है वो कह रहा है कि नहीं वो रूट्स में नहीं होता क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होती. ट्रू. बट हियर थिंग प्लास्टिड का काम केवल फोटोसिंथेसिस नहीं होता, राइट? देयर आर थ्री काइंड ऑफ प्लास्टिड्स, that is chloroplast, chromoplast and leucoplast. राइट? जैसे हम वो खाते हैं स्वीट पोटैटो खाते हैं. स्वीट पोटैटो हो गया, रेडिश हो गया, राइट? then there is turnip हो गया, and then there is also carrot हो गया. They all are excuse me, they all are fruits and they have chloroplast, they have chromoplast. रेडिश कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट और वो खाना स्टोर करते हैं बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. सो हियर रेन इज करेक्ट बिकॉज plastids are not only the chloroplast, they are chromoplast and leucoplast as well. So Renu is actually correct here. So Rohit thinks that plastids are only green chloroplast. They do perform photosynthesis, but plastids can be of different types, right? The green chloroplast that we have, then the colorless leucoplast, they acts as a storage for the food, and then there are chromoplasts as well. Chromoplasts as well. Now, mitochondria and chloroplasts. The next question is the mitochondria and the chloroplasts are the two important organelles in the plant cells. Yes, mitochondria and chloroplasts are the important organelles. Discuss how these two organelles are structurally and functionally similar to each other and different from each other. चलो देखते हैं दोनों सिमिलर कैसे हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में एंड डिफरेंट कैसे हैं. पहले देखते हैं हाउ दे आर सिमिलर. ओके, ये दोनों में सिमिलैरिटीज क्या समानताएं क्या है. They both have double membrane organelles. They both have double membrane organelles. Both are wrapped inside two protective membrane. They have their own DNA. Yes, there's mitochondrial DNA and there is chloroplast DNA. So that they can perform their own proteins. More circular DNAs होते हैं उनके अंदर. Now, how are they different? Look, the inner layer of mitochondria is folded into cristae, right? एक बाहर की लेयर होती है, inner membrane होती है वो ऐसे ऐसे folded होती है mitochondria में. Whereas it has internal stack of coinate structures called thylakoids. इसकी membranes ऐसे नहीं होती, like folded नहीं होती. Mitochondria is colorless, whereas chloroplast is colored because it has chlorophyll. Primary job is just cellular respiration to producing energy from the glucose. Its main is just to make the food, photosynthesis. So they are kitchen of the cell, they are the powerhouse of the cell. I hope चीजें समझ आई हूँ आपको, and I think it's very easy to understand as well. Now, which of the following phase of cell organelles contain DNA? Yeah, कौन से ऑर्गेनल में होता है? क्लोरोप्लास्ट में यस, राइबोसोम में नहीं होता. माइटोकॉन्ड्रिया में यस, न्यूक्लियस में यस, गोल्गी बॉडी में नहीं होता, राइबोसोम में नहीं होता, न्यूक्लियस में होता है, लाइसोसोम में नहीं होता. तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में डीएनए होता है. ओके, हियर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. A researcher carried out an experiment in which she took two carrots of similar sizes. She placed one carrot in plain water A, जो ये है plain water A में रखा है, and the other carrot is concentrated salt solution B. Again, hypotonic, hypertonic, hypertonic.
Now, after 24 hours, she recorded her observation. Okay, 24 घंटे में रखे रहने दिया, फिर उसने अपने observation को record किया. What hypothesis does she want to test for this experiment? Okay, what would you suggest for improvement in this experiment? Why does the carrot in plain water stay stiff and crunchy, whereas the carrot in the concentrated salt solution becomes rubbery and limp? Okay, पहली चीज, what is being tested? वो क्या चीज टेस्ट करना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू? The researcher wants to prove that water can flow naturally in and out of the plant cell through the membranes depending on the concentration of water around them. She just wants to test for the osmosis in the plant cell, basically. Okay, how to improve the experiment? Now, instead of just looking at the carrots, we can initially weigh the carrots, right, on the weighing scale before putting them into the water and salt solution. So हमें एग्जैक्टली पता हुआ कितना चेंजेस हुआ है कैरेट के वेट में, राइट, कितना पानी अंदर आया, कितना पानी बाहर गया. Now, third question, right? In the plain water A, water concentration is out, like it's a hypotonic solution. ठीक? तो water moves inside the carrots and cells थोड़ी inflate हो जाती है, right? That's right, तो carrot tight हो जाती है, right? थोड़ी फूल जाती है, थोड़ी rigid हो जाती है. That's right. Whereas in the second solution, water gets out of the carrot cells. तो cells के अंदर भी पानी कम हो गया, cells starts to limp. वो इतनी like वो नहीं होती, strongly built नहीं रहती, stiff नहीं रहती. They have plasmolized, right? उनकी cell wall and shell membrane के बीच में space आ गया है. They are wilted. मैंने एक word पढ़ा था ना, wilted. Vacuole से पानी लूज हो गया है. Indicate the presence and absence of following structures in bacterial animal cells. Okay. Question number 9. Okay. Indicate the presence and absence of okay. Indicate the presence and absence of the following structures in the bacterial cells and animal cells. Chromosomes in bacterial cells, animal cells. It is present in animal cells. Chromosomes are also present in bacterial cells, but बहुत rudimentary होते हैं. Okay. Nucleus is absent in the animal cells, so bacterial cells, but present in the animal cell. Mitochondria, membrane-bound organelle है, bacterium नहीं present होगा, animal में present होगा. Golgi body, membrane-bound organelle है, नहीं present होगा, animal से present होगा. Chromoplast, plants में होता है, बहुत complex wings में होता है, इसमें नहीं होगा, animal cells में नहीं होता है. That's good. We have right. Yeah. Chromosomes simple होते हैं, open looped होते हैं, but present होते हैं. Present होते हैं. Nucleus absent है, present है, everything is absent. We have answered it quite right. Yeah, there's experimental setup next again. So we have to carry out the following experiments. हमें क्या करना है, एक आलू लेना है, उसको दो हिस्सों में काट देना है, उसके अंदर का आलू निकाल देना है, एक कप जैसे स्ट्रक्चर हमें ऐसे बना लेने हैं. ओके, हमें 4 सेट ऑफ कप लेने हैं, A, B, C, D. इन द कप A, कीप द कप एम्प्टी. पानी डाला बीकर के अंदर, में खाली रख दिया हमने कप A को. Add 1 teaspoon of sugar in cup B. B के अंदर हम थोड़ी शुगर डाल दी. Add 1 teaspoon of salt in third cup and add 1 teaspoon of sugar in the boiled potato. हमने इस वाले आलू को हमने बॉईल कर रखा है, उसमें हमने चीनी डाली है. Explain the following question. Explain why water gathers in the hollowed portion of cup B and C. Okay. हमें क्या बताना है कि इन दोनों में पानी क्यों मूव कर गया. सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे हाइपोटोनिक है, मतलब सोलेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे लो है, तो ऑस्मोसिस से वाटर विल मूव. Why cup A is necessary for this experiment? It acts as a control. प्रोड्यूस करते कंट्रोल कि हमें एक ऐसा कप तो चाहिए जिसमें लाइक कुछ नहीं डालो, हमें लाइक ऑब्जर्वेशन को हम किसी चीज से कंपेयर कर सके. Explain why water does not gather in the hollowed portion of cup A and D. Here, so it's like almost isotonic condition. There is water there, but there is no salt concentration there. तो almost similar concentration है यहाँ पे. यहाँ पे excuse me. In this case, the potato is boiled. So cell wall and cell membranes are destroyed. Cell wall and membranes are destroyed. That's why water is no like semi-permeability and selective permeability. They both are lost. देखो, why cup? Excuse me. So why water fills cup B and C? We have put sugar or salt inside the dry potato, and hollows created a thirsty, highly concentrated area. Yes, because वहाँ पे salt concentration काफी high है. Because the potato tissues are alive, of course, potato are alive here. It acts as a selective filter, and water from the beaker travels right through the potato body via osmosis
to mix with the sugar and salt solution and filling the cup. Why cup A is needed? Cup A is completely empty to serve as a control experiment. It proves us that water will not flow or fill into the potato cup on its own unless sugar or salt is present to draw the water in via osmosis. Okay, now why water stays out of A and B. Cup A has no sugar and salt solution, so there is no null pull to attract water. Okay? Cup D, boiling the potato completely killed its cells and destroyed its membrane. Dead membranes completely lose their selective filtering power, so no osmosis. No osmosis. Identify the pair of incorrectly meshed cell organelles with their function. Ribosomes, yes, they do perform protein synthesis. Smooth endoplasmic reticulum, they do perform lipid synthesis, but cellulose synthesis is not by them. Lysozyme, digestion of foreign agents, smooth endoplasmic reticulum में उसका काम केवल लिपिड सिंथेसिस है, cellulose synthesis नहीं है. That's why this option is wrong. What outcome do you expect if all the mitochondria are removed from the eukaryotic cell? अगर सारी mitochondria हम निकाल देंगे तो सेल के पास एनर्जी ही नहीं रहेगी काम करने के लिए. It's they will eventually die because they don't have enough energy to work. Mitochondria are called the powerhouse of the cell because they burn food to generate energy, and the packets called ATP. Yes. If you take them away, the cell will no longer have energy fuel to carry out their everyday life. Processes like cell division, movement, waste cleanup will stop completely and cell will run out of power and will eventually die. Which phenomena inhibits the formation of tumor in the human body? Can plant cell also develop tumors? There is a thing called programmed cell death, contact inhibition. They are very sick. Our cell division is very controlled, happens in our body in a very controlled manner, and this is what governs the uh, body is to stop forming the tumor cells. So, preventing human tumors. Our body cells are naturally have oh, sorry, our body our body cells use a natural safety tricks called apoptosis means cell death जो pre-programmed होती है programmed cell destruction ठीक है if cell gets old get corrupted like they start malfunctioning they get damaged it deliberately self-destructs so it cannot divide out of control to form a tumor. That's why cell division happen in a very controlled manner and if cell grows old they will eventually die. Second thing, plant tumors. Yes, plant can also grow tumors too. There's a very famous disease that is called crown gall disease, which is a bacterium that infects the plant stem and root and modifies the plant cells control instruction. एक बैक्टीरिया होता है जो सोइल में होता है जो प्लांट के स्टेम और रूट्स को इन्फेक्ट करता है एंड वो मोस्टली जो सेल डिवीजन प्रोसेस होता है उसका प्लांट सेल का उसको अफेक्ट करता है and this makes the plant cells to divide rapidly over the time creating hard tumor lumps. इसी कारण से हमारी सेल्स होती है वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करती रहती हैं and they eventually form tumor. Excuse me. The cell membrane of a cell is made up of protein and lipids. Yes, which cell organelles helps in the synthesis of cell membrane? We write the path for these compounds to form from the site of synthesis to the cell membrane. So through a labeled diagram. देखो, they are made up of protein and fats. प्रोटीन कौन बनाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कौन बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर दोनों पैक होकर कहाँ जाते हैं गोल्जी बॉडी के पास देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन. ठीक है फिर उसको वहीं पे रिपेयर एंड फॉर्मेशन की जरूरत है. सी द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. यस सेल मेम्ब्रेन हम बनाते हैं इसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. टू मेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोनेंट्स फिर द रॉ मटेरियल प्रोटीन कौन बनाता है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है फैट्स. सो दैट्स वेरी सिंपल ट्रांसफर पाथ. सारे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारे रो प्रोडक्ट बनते हैं प्रोटीन एंड फैट देन टाइनी वेसिकल्स में वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में वो डलते हैं देन वो गोल्जी बॉडी के पास जाते हैं जहाँ पे उनको सोर्ट किया जाता है किसका ये पर्टिकुलर प्रोटीन किस काम आने वाला है कहाँ भेजना है. उसके बाद उनको दोबारा पैक किया जाता है वैक्यूल्स में उनको दोबारा साइट के लिए भेज जाता है जहाँ पे उनको सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज किया जाता है. प्रोटीन फैक्ट्री से प्रोटीन आया पैक हुआ बबल के अंदर वेसिकल्स हम ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल्स बोलते हैं. गोल्जी बॉडीज के पास जाएगा फिर वो सेक्रेटरी वेसिकल्स के पास जाएगा और सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएगा. So this is the delivery route. Now the question number 50. What would happen if gametes are formed by mitotic division? Not
तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर हर एक गैमेट माइटोटिक डिवीजन से होगा, mother has 2n number of chromosomes, father has 2n number of chromosomes, and they will form 2n and 2n number of gametes. They will form together form 4n. एंड ऐसे ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते जाएंगे हर एक सेल में, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें सेल के अंदर केवल न्यूक्लियस होगा एंड बाकी साइटोप्लाज्म विल श्रिंक डाउन और अदर ऑर्गेनेल्स श्रिंक डाउन हो जाएंगे, देन दे विल डाई। मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है, एक पेरेंटेज में 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, तुम्हारी मदर के अंदर 2 है, तुम्हारे फादर के अंदर 2 क्रोमोसोम्स है, इनमें म्यूसिस होती है, हर एक सेल में एक एक क्रोमोसोम बच जाता है, ठीक है, जो सेक्स सेल्स होती हैं, देन दे विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, जिसमें केवल 2 हैं, एंड वो वापस पूरा इंसान बन जाता है डिवाइड हो के माइटोटिक डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस, पेरेंट्स में 2 हैं, बच्चे में भी 2 ही बने। आई होप ये चीज समझ आ रही है। बट अगर क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ मियोसिस is mitosis in the mother and the father's genetics, sorry, germ cells, sex germ cells, तो अभी जो स्पर्म बनेगा, एग बनेगा, उसमें भी 2 2 क्रोमोसोम्स ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे, उसमें कितने होंगे, 4 इन जाइगोट, एंड इंसान पूरा ग्रो होगा माइटोसिस से, उसमें 4 होंगे, मदर फादर में 2 थे, बच्चे में 4 आ गए, एक्स्ट्रा आ गए। इंसान में एक्स्ट्रा चीज जब भी होती है, इट्स ऑलवेज हार्मफुल, ऑलवेज हार्मफुल। एक्स्ट्रा डीएनए है, एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो धीरे धीरे क्या आएगा, अभी इसके अंदर 4 थे, कल के दिन ये भी पेरेंट्स बनेगा, ही विल एक्ट एज अ मदर एंड फादर फॉर सम कंट्री, उनकी स्पर्म सेल्स नेक्स्ट सेल में 4 होंगे, उनका बच्चा होगा उसमें 8 होंगे, तो ऐसे ऐसे आफ्टर सम जनरेशन केवल ऐसा होगा, सेल के अंदर केवल तुम्हारा न्यूक्लियस है, बाकी सब है ही नहीं, तो सेल मर जाएंगी, स्पीसीज विल एक्सटिंक्ट, स्पीसीज विल एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। So normal cells are diploid, means they have 2 pair of chromosomes. Diploid मतलब होता है 2 pairs of chromosomes, मतलब एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, they contains 2 copy of each chromosomes, yes. Normally cell division, spatial cell division called meiosis cuts the count exactly into the half, so eggs and sperm are haploid, 2 है ना होता है, meiosis होती है, egg and sperm में half half होते हैं, but if the gametes are built by mitosis, then the sperms and egg will have 2n and the zygote will have tetraploid, मतलब 4n, 4 times, एंड धीरे 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 टाइम ऐसा आएगा कि after many generation there will be just chromosomes in the body and nothing else, and cell will die. The rapid accumulation of unnecessary chromosomes would instantly scramble the cells operating instruction, making it completely impossible to survive, species to survive. I hope मैंने एक चीज explain कर दी है, वो चीज समझ आई हो. Now this is the last question. Deepa process surplus amla and lamins into pickle, okay, and murabbas and sarbat by adding appropriate amount of salt, sugar and jaggery. Which scientific concept has farmers applied in the preservation of the farm produce? Yes. हम अभी देखो, हमारे घर पे अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं, हम उसमें नमक भी यूज करते हैं, चीनी भी यूज करते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी हम यूज करते हैं, एंड हम आंवला और नींबू का अचार डाल रहे हैं, तो देखते हैं मेरे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, ठीक है। How does the addition of high concentration salt and sugar create environment that prevents the growth or spoilage of, तो अगर हम ज़्यादा नमक और शुगर डाल देते हैं तो कैसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि उसमें बैक्टीरिया फंगस को नहीं लगने देता, तभी अचार और मुरब्बा होता है वो कई महीनों तक चल जाता है बिना खराब हुए. So just a healthy recipe of this kind of food preservation. What is the scientific values addressed in this case? चलो तो इस क्वेश्चन को एक एक करके आंसर करते हैं, ठीक है. कोर साइंटिफिक आइडिया, दीपा यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, मीन्स इस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सोस्मोसिस, इसमें क्या होता है, हमारा वाटर कंटेंट सेल से बाहर निकल जाता है, ये सेल किसमें प्लेस्ड है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से वाटर इज मूविंग आउट ऑफ सेल्स इनटू द डेंस राउंड, बिकॉज हम चीजों को प्रिजर्व करना चाहते हैं, टू प्रिजर्व समथिंग ड्राई इट्स बेटर ना, वेट चीजें जल्दी खराब होती हैं इन कंपैरिजन टू ड्राई थिंग्स. हाउ डज इट स्टॉप germs? So when
Pieces of fruits are coated in a thick layer of salt and sugar. It sets up a strong, highly concentrated environment outside. When floating bacteria or fungus spores lands on the food inside the germ cell is immediately sucked out of the salt sugar layer by osmosis. This causing the germ cells to shrivel completely and lose their shape. And without the water, these cells cannot grow. Basically, what it is saying that जो मुरब्बा होता है नमक हमारा अचार होता है उसमें काफी नमक और चीनी होती है जो हाईली हाइपरटोनिक कंडीशन है कोई भी जर्म सेल आएगी कोई भी प्लाज्मा सेल सॉरी बैक्टीरिया सेल है या फंगल सेल है अगर वो आएगी तो ऑफकोर्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएगी तो उनके अंदर जितना पानी है इट विल मूव आउट और उनकी सेल्स श्रिंक हो जाएगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे दे विल डाई नाउ सिंपल हेल्दी प्रिजर्व रेसिपी हमें एक सिंपल सी रेसिपी बनानी है हमें केवल आमला स्लाइस बनाने वाले हैं हम ठीक है हम क्या करेंगे टेक ए फ्रेश क्लीन आमला फ्रूट prick them safely with a fork and steam them gently until soft हमें आंवला लेना आंवला चाटना है और हमें उनको उबालना है ठीक है rub the slices into clean jar and submerge them full into pure organic raw honey हमें उनको एक जार में डालना है जो ग्लास जार होता है कि वो रिएक्ट ना करे किसी चीज के साथ और हमें उसको शहद में डुबो देना है एंड इफ यू वांट यू कैन ऐड सम जिंजर स्लाइसेस एज वेल why it works देखो natural honey acts as a perfect concentrated sugar shield that dries out the invading germs and naturally avoiding unhealthy white refined cane sugar शहद ज्यादा गाढ़ा होता है मोर विस्कस होता है ठीक है एंड इट्स अ गुड नेचुरल शुगर इतना हार्मफुल भी नहीं होता उसके लाइक पोलन्स होते हैं उसमें बाकी बी वैक्स भी होता है थोड़ा बहुत मिक्स तो हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है एंड वो परफेक्ट हाइपरटोनिक कंडीशन बनाता है जिसके कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में नाउ साइंटिफिक वैल्यूएशन सीधी सी बात है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग यस हमने साइंस लेसन यूज किया ऑस्मोसिस फ्रॉम स्कूल टू प्रोटेक्ट रियल फूड क्रॉप जो आम है आंवला जो खराब हो जाता है कुछ महीनों महीने नहीं लाइक विद इन फ्यू डेज हम उसका अचार मुरब्बा बना सकते हैं और वो महंगे बिकते हैं तो गुड रेवेन्यू सोर्स फॉर द फार्मर जीरो फूड वेस्टेज हमने खाने को प्रिजर्व किया हमारे पास अगर खाना एक्सेस में था हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं खाना स्पॉइल नहीं होगा खाना रोट नहीं होगा सड़ेगा नहीं एंड स्मार्ट बायो entrepreneurship turning the simple farming crop into a valuable food product on a better life हमने जो आंवला 5 रुपए किलो बिकता है हमने उसका अचार मुरब्बा हमने 50 या 100 रुपए किलो बेचा है तो जो चांसेस हैं देखो जो कैश फ्लो है जो फाइनेंशियल कंडीशन है फार्मर की वो इम्प्रूव होती है इस चीज से सो इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल so this was the final part of this chapter I will provide you with the pdf and yeah I'm going to see you in the next chapter